मौसम बदलते ही सर्दी खांसी हो जाती है। बार बार गला खराब या सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका मतलब सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, आपकी इम्यूनिटी और लंग्स दोनों को सपोर्ट की जरूरत है। आज हम करेंगे एक सिंपल योग रूटीन जो लंग्स को मजबूत करेगा, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। सांस को पेट, चेस्ट और गले तक हवा भरनी है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। टेन टू 12 टाइम डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबा श्वास लेना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। डीपली इनहेल, श्वास को पेट, छाती और गले तक भरिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। डीप एब्डोमेन और चेस्ट ब्रीदिंग कीजिए। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। अब पेट के बल लेटिए आराम से। अब फर्स्ट आसन करेंगे भुजंगासना। करना कैसे है? लेग्स टुगेदर, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ छाती के साइड में। अब इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, एल्बो आपके रिब्स के पास में। डीप ब्रीथ करना है एंड एक्सेल डाउन। 1 डायनेमिक करेंगे फॉर 10 काउंट। इनहेल, डीप ब्रीथ एंड एक्सेल। 2 इनहेल एंड एक्सेल। 3 इनहेल। आपको पूरा बॉडी नहीं उठाना है, आपका जो पेल्विक रीजन है वो फ्लोर से टच रहेगा। एक्सेल डाउन। 4 इनहेल एंड एक्सेल। 5 इनहेल एंड एक्सेल। 6 इनहेल and exhale. 7 inhale and exhale. 8 inhale and exhale. 9 inhale and exhale. 10. Now release and relax in मकरासना। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए।
नाउ भुजंगासना होल्ड करेंगे। अगेन दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, लेग्स टुगेदर। इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाइए। होल्ड, डीप ब्रीथ, डीप चेस्ट ब्रीदिंग करते रहे। 1, होल्ड फॉर 10 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now release and relax in सुखासना। बैठिए आराम से, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड। डीपली inhale and exhale. लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अब हम कपालभाति क्रिया का प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम। करना कैसे है? लंबा श्वास लेना है एंड फोर्सफुली एक्सहेल करना है। इनहेलेशन ऑटोमेटिक होता रहेगा। स्टार्ट करेंगे। डीपली इनहेल, रिलैक्स। Deeply inhale and exhale. लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अगेन कपालभाति क्रिया का सेकेंड राउंड करेंगे। लंबा श्वास लीजिए,
रिलैक्स। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करेंगे। करना कैसे? राइट हैंड नासिका मुद्रा में मिडल और इंडेक्स फिंगर को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। नाउ क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, आराम से बाईं नासिका से श्वास लेना है। क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल फ्रॉम राइट। दाईं नासिका से आराम से श्वास को छोड़िए। Inhale right, close right and exhale from left nostril. Inhale left, close left and exhale from right nostril. कंटिन्यू करेंगे 4 to 5 मिनट। ध्यान रखिए, फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल नहीं करना है। आराम से श्वास लेना है और अल्टरनेट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है।
रिलैक्स। नाउ भ्रामरी करेंगे 7 to 8 राउंड। सन्मुखी मुद्रा लगाएंगे। फर्स्ट ईयर लोब्स बंद कीजिए। टंग के टिप को अपर पैलेट से टच करके रखना है इस प्रकार से, एंड थ्रोट से हमिंग साउंड क्रिएट करना है, नकारा का उच्चारण। स्टार्ट करेंगे। लंबा श्वास लीजिए। रिलैक्स। लंबा श्वास लीजिए और छोड़िए। अगर आप रोज सिर्फ 15 मिनट भी इस रूटीन को करेंगे तो धीरे धीरे आपको फर्क महसूस होगा, सांस बेहतर होगी और इन्फेक्शन कम होगा, साथ में एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए योगा फिटनेस विद विजन के साथ।